Good morning, students. In this video, you will learn about the advanced features of MS Access. So, in previous video, you have learned something advanced feature of the Access. So, in this video, you will learn about the remaining part of that chapter number 4. In this video, you will learn that queries in Access, that what is the mean of query and how you can run query in Access. You will learn about the forms in Access, that what is the mean of form and how we can use the X form in Access. Then you will know about the reports, that how you can create a reports and display the reports in Access. So in this upcoming video, you will learn these three topics. So now let's begin with this video. First of all, query. The query, what is the mean of query? That query is used to get the specified information from the one or more table in the database based on the condition. So if you talk generally that what is the mean of query? So query mean simply just like a question. So whenever you ask a question to your teacher or to anyone, so that person or the teacher will answer you according to your query. So from the whole knowledge of that person, he or she filter your that information and respond you according to your answer. So this is the mean of query. Now that how you can run query in Access and how we can use the query in MS Access. So let's get some practical knowledge about this. So to use or to create query, you just need to first of all, just open your table in Microsoft Access. So here I'm already created this table in previous video. So we will continue with this table. So to create query, you need to just follow these steps. So just first of all, you have to click on the create tab, and here you can find the query in this query, the other box. Okay, so here you can see the query design. So you have to click on that particular query design, then this window will appear to you. So here we have two table. So I'm using the second table, so that's why I have to click on the table number 2. So if you have created only one table, so no need to worry, you just need to click on that particular table. So after clicking on this table number 2, we have to click on this add button. So after clicking on that add button, that particular table will appear here, and the all field of that particular table will, you can see here. So after clicking on that close button, we will close this window, and we can see here all these field name of that table number 2. So what is the mean of query? So query mean the whenever you ask about the specific information from the query, then that particular information will show. So here we just want to display first number like ID. So to select this one, we just need to double click on that particular ID. So whenever you double click on that particular any field, so it will appear here. Okay, so after that I will click on that name. Okay, so just suppose we just want to display the name, and just suppose like class. So here these three field I just want to display. So here we just created the query. Okay, so after the creating this one, we just need to save it. Okay, so clicking on this file tab, and we just have to click on the save button. Okay, so here you can give the name of the query. So I'm just giving the query number 1. So here it is 2, and simple query. So here I'm just give the name as a simple query, and then press the OK. So you can see here the query number 1 and the query simple query is here. Okay, so how after this one, then how we can run the query? So click this one and double click on this one. Okay, so after the double click on that particular query, you can see here the all information about this query is here. Okay, so ID is here, and the name and class. So in just previous time we just selected these three field. So after that we can see these three field here. Okay, so this is the simple as that what is the mean of query.
So whatever you selected in query and whatever you want to ask or display in the query, so that will appear here. Okay, so just suppose if you want to display the only 8th class students information, so you just need to right click on that button, this portion, and you can choose this design view. So after clicking on the design view, you can see this window here. Okay, so जैसे ही just suppose करो कि आपको 8th क्लास की इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करनी है, अभी इसमें यहाँ पे क्या आ रहा था, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी सब पूरी क्लासेस की। ओके, और जितने भी स्टूडेंट थे सब क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आ रही थी। बट अगर आपको केवल 8th क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर आप क्लास के अंदर 8th जैसे ही लिखेंगे और सेव करेंगे। यू कैन सेव एज अ कंट्रोल प्लस एस, और यू कैन सेव इट हियर ऑल्सो। ओके, सो जैसे आपने सेव किया, अब आपको क्या करना है, रन करनी है क्वेरी। तो क्वेरी रन है ऑलरेडी, आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं और डबल क्लिक करके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो मैं इस बार यहाँ से करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ किया, तो देखिए कि इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और वो कौन सी है, केवल 8th क्लास की। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेरी रन करना और क्रिएट करना। ओके, सो आई होप you have learned about this query, that how we can create and how we can run it. So do practice with this query. Now it's time for the form. So what is the mean of form? So a form is generally used to view one record at a time. It makes the data entry process easier for the user, and it displays the field of only one record. Although the data can be entered easily in the datasheet view of a table too, but the form is more user friendly. Restriction can be put on the individual form component to ensure that the data is entered in a valid format. We will learn to design form using the form command. So here you can learn about the form, how you can create a form. So what is the mean of form? That you can enter the data or view the data from the table like one by one. Okay, so it is provide you easier way to enter the data to a particular record. So now let's take a look that how you can create a form in MS Access. To create form in MS Access, you just need to go again in Microsoft Access with the table. To create a form, you just need to click on this create tab. First of all, we have to click on this create tab. So here in the forms group, you can see the form. So click on this form, and here you can see the form format in this window. So first of all, you need to just save this form. So to save this form, we have to click on this file button, and you have to just click on the save. So here you can give the form name. So here I'm giving the form 1 as a form name, then press the OK button. ओके, सो जैसे ही आप लोगों ने प्रेस किया, अब क्या करना है आपको, फॉर्म के अंदर आप यहाँ पे ये आप 3 सेक्शन यहाँ से देख सकते हैं. सो हियर द फर्स्ट सेक्शन इज द नेविगेशन बार. So here after clicking on this next button, you can see all the detail of your record in the table. So after clicking on this one by one, you can see the all records one by one. And this is the button of the new blank record. So whenever you want to enter the new records, you just need to click on this button. And here you can see the search bar. So whatever you want to search from your table, you just put it here. So just like I am giving the Aman as a name, so Aman will be, if it it is in the table, so it will be show here like this. Okay, so ID is 1 Aman's, and name Aman, father's name is Jay, and then class 8, and DOB is the 12/9 and 2018. So whatever you type in the search box, if it is available in the table, so it will show like here. So अभी तक आपने ये पूरा इसको जैसे व्यू किया आपने, ठीक है. सो जस्ट सपोज करो कि जैसे ही आपको इसके अंदर कोई नई एंट्रीज ऐड करनी है, तो आपको क्या करना होगा. सबसे पहले आपने फॉर्म को सेव कर लिया, और सेव करने के साथ ही में फॉर्म के नाम से यहाँ पे ये आपको फॉर्म का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा. अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म का पहले यहाँ से क्लोज कीजिए, ठीक है. देन यू हैव टू क्लिक, डबल क्लिक ऑन दिस वन फॉर्म बटन. ओके,
and you can see here 9 as a new ID. Okay, and if you didn't see this one, okay, जैसे आपको सपोज करो यहाँ पे ये अलग पूरी एंट्रीज दिख रही है, तो आपको क्या करना है, न्यू रिकॉर्ड पे जाके क्लिक करना है। और जैसे आप लोग न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म आपको दिख गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी आप जो भी नाम डालना चाहते हैं या कोई भी नई एंट्री डालना चाहते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे तो जैसे ही सपोज करो मैंने राहुल एज अ नेम लिया, फादर्स नेम सपोज श्री, क्लास 9, क्लास 9 ले ली। ओके, और इसके बाद में मुझे डेट एंटर करनी है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ सपोज करो मैंने 18 ले ली, और ईयर में चेंज करके 2018 ले रहा हूँ। उसके बाद में टोटल मार्क्स मैंने 50 लगाए। ईमेल आईडी रेंडम ईमेल आईडी में डाल रहा हूँ इसके अंदर @gmail.com। एंड फी स्टेटस को क्लिक नहीं करके मैं यहाँ पे सिटी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, जैसे कि ये लिखा। ओके, सो अब जैसे ही मुझे मैं प्रेस करूंगा एंटर, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रिकॉर्ड अपनी टेबल में चला जाएगा, जो आपने जिस टेबल का ये फॉर्म क्रिएट किया है। और आप इसको भी प्रेस कर सकते हो, न्यू ब्लैंक को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, यहाँ से रिकॉर्ड उठ के आपकी पुरानी जिस टेबल का ये फॉर्म है उस टेबल में चला गया। तो अगर देख लेते हैं कि हमारे टेबल में गया कि नहीं गया, तो हमने टेबल 2 का फॉर्म क्रिएट किया था, हम लोग डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखो मैंने लास्ट में जो मैंने इसके अंदर जो एंट्री की थी वो था मेरा राहुल नाम से, तो राहुल नाम से ही आ गया। ठीक है, अभी ये जो है एंटर, मैं इसको फिल्टर कर दे, सॉर्ट कर देता हूँ, देखिए A to Z में। ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आ गई। ठीक है, राहुल नाम से आ गया यहाँ पे ये सारी चीजें। Okay, so this is how you can create a form and use this form to view or to enter the new record in your table. Now next part is report. So what is the meaning of report? So report is used to present the data in user friendly formatted manner, which can also be printed. Report offer way to view, format or summarize the information in your Microsoft Access database. You can create report for the both table and queries. You can design a report in different ways. We will learn to design a report using the report command. So to design a report, we just need to go back on the Microsoft Access and use the table. So here we are back to our Access. To create report, we have to just click on this create button, and here in the reports section you can see the report. So to create a report you have to click on this report and this window will appear here. So our जो भी हमारी टेबल की रिपोर्ट थी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी. So all the information are from our table, it will show or display like this. So ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन, ये आपके पेपर के सेक्शन को दिखा रही है कि कितने पेजेस में ये रिपोर्ट प्रिंट होने वाली है. ओके, so here you can see the 3 section format, arrange and the page setup. So you can format your report from this section and you can arrange all these things from this section, and the page setup you can use this one here. Okay, then how you can print this report. So to print, so first of all, if we have to save this report, okay. So again, to save this report, we have to click on the save button and give the report name. So suppose I just gave the report one, okay, here. So it will save here. And to view as a print preview, we have to just right click on this one, and here you can see the print preview. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे तो रिपोर्ट ऐसे इस पेजेस में इस तरीके से प्रिंट होने वाली है. ओके, तो अगर सपोज ये आपको यहाँ पे एक फर्स्ट पेज मतलब कि 1 पेज का आपको प्रिंट दिखा रहा है, अगर आपको 2 पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे आके इस 2 पेजेस पे क्लिक करके देख लीजिए, तो 2 पेजेस का आपको दिख जाएगा. अगर आपको ज्यादा पेजेस का देखना है तो यहाँ पे तो हमारी जो पूरी रिपोर्ट है वो 3 पेजेस में प्रिंट हो रही थी, तो यहाँ पे इसने 3 पेजेस दिखा दिए. ओके, एंड अगर आपको प्रिंट करना है तो हियर यू कैन सी द प्रिंट बटन. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस वन इट विल प्रिंट यू. सो रिपोर्ट का बेसिकली मतलब था कि आपके जो भी डेटा था आपके
टेबल में, वो पूरा टेबल जो था डेटा, वो आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको प्रिंट हो जाएगा. ओके. So this is how you can create a report and print the reports. So I think you all very well learned about this, all three things, like a query. Then we just learned about the form, that how you can create form, and how we can use to view or insert the form to new entries. And after that, we have learned that about reports. So we have completed this topic here. So watch this video again. If you have any doubt and inquiry, you can drop your message in the comment box, and you can message me directly. So stay safe and stay happy. Thank you.